Hello students, a very good evening to all of you. I Anupama welcome you all at the VAL classes. So today we are going to start our lecture number 23 of the most important question series for your exam of Master Cadre. Okay जी? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. चलिए, तो बिफोर वी मूव ऑन विद द क्वेश्चन सीरीज, do not forget to like the video, subscribe the channel, press the bell icon. हाल मत पूछो एकता, मेरा हाल मत पूछो. हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन सीरीज. व्हाट टू एक्सप्लेन निशा? आपने बस बोल दिया प्लीज एक्सप्लेन. व्हाट टू एक्सप्लेन? बच्चे, सुबह 10:30 बजे से यहाँ पे हूँ. 10:30 बजे से यहाँ पे हूँ. फोर्थ बैच के लेक्चर्स ही लेक्चर्स. नाउ आई एम टायर्ड, बैडली टायर्ड. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. Which of the following book is not written by Khushwant Singh? The Sunset Club, Truth, Love and a Little Malice, A Bend in the River, Train to Pakistan. Definitely I am Neeraj, I am tired. हाँ जी, फटाफट से खत्म करते हैं आप इसे. Yes, it is Bend in the River. Question number 2. Besides literature, Tagore contributed to architecture, archaeology, occult science या magic? हाँ जी, besides literature, Tagore contributed to. बच्चे, मैंने म्यूजिक ऑप्शन ही नहीं दिया, इसीलिए इसीलिए मैंने म्यूजिक ऑप्शन नहीं दिया. He contributed to architecture. जी, he was an architect as well. Who made a film on Tagore's Home and the World? टैगोर के इस नॉवल होम एंड द वर्ल्ड पे फिल्म किसने बनाई थी? सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घातक या तपन सेन? Who made a film on Tagore's Home and the World? Yes, it was Satyajit Ray. On which issue is Amitav Ghosh's The Great Derangement written? Social issue, climate issue, political issue या globalization? अमिताभ घोष का द ग्रेट डीरेंजमेंट किस इशू पे बेस्ड है? Yes, it is based on climate issue. Question number 5. Who described Byron's mock epic Don Juan as something wholly new and relative to the age? हाँ जी, किसने डॉन जुआन को एक नए तरह का वर्क कहा एंड कहा दैट इट इज टोटली रिलेटेड टू द एज? शेली, कीट्स, कोलरिज या साउदी? Who made this statement about Byron? Yes, very right. It was P.B. Shelley. जी, बिल्कुल सही. जिन्होंने शेली आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. It was P.B. Shelley. Question number 6. Which play of Shelley predicts humanity's eventual freedom from tyranny? ये जिसमें शेली ने जो है ह्यूमैनिटी की फ्रीडम को प्रिडिक्ट करा है टिरनी से, क्रुएलिटी से. हेलास, द सेंशी, प्रोमीथियस अनबाउंड या एडोनिस? किस प्ले में उसने जो है ये फ्रीडम दिखाई है ह्यूमंस की? Yes, it is in the play Prometheus Unbound. Very, very right. It is in the play Prometheus Unbound. Question number 7. Which poem of Keats begin with the line, "A thing of beauty is a joy forever"? Endymion, To a Grecian Urn, To a Nightingale, या The Eve of Saint Agnes? Which poem of Keats begins with the line, "A thing of beauty is a joy forever"? Yes, it is Endymion. Very, very right. Question number 8. To which work did Mary Wollstonecraft defend the French Revolution? Thoughts on the Education of Daughters, A Vindication of the Rights of Man, A Vindication of the Rights of Women या Mary a Fiction? किस वर्क के जरिए मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिफेंड करती हैं? वेरी वेरी गुड. यस, इट्स द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन में उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिफेंड करा है. The Lotus Eaters presented a perfect picture of a life of dreamful ease.
हार्मनी, स्प्लेंडर या फैंटेसी? हाँ जी, लोटस ईटर्स जो टेनिसन की पोएम है, इट प्रेजेंटेड अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ ड्रीमफुल ईज, हार्मनी, स्प्लेंडर या फैंटेसी? इट प्रेजेंट्स अ लाइफ ऑफ, इट इज फैंटेसी। ओके, इट प्रेजेंट्स अ लाइफ ऑफ फैंटेसी। कि लोटस की जो रूट खाने के बाद जो है, मतलब वो जो है किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है, लोटस की रूट खाने के बाद जो है वो किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which quality of Keats impressed Tennyson the most? Romanticism, sensuousness, medievalism या imagery? हाँ जी, which quality of Keats impressed Tennyson the most? Again, it's a new question. It was medievalism. Okay, मतलब उसका ग्रीक कल्चर का इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक कल्चर। तो टेनिसन वाज इम्प्रेस्ड बाय कीट्स's medievalism। जी, आई नो ये नया क्वेश्चन है। Which Victorian poet wrote God's in his heaven and all's right with the world? All's right with the world. Arnold, Tennyson, Browning या Ruskin? Who said God's in his heaven and all's right with the world? Yes, it is taken from Browning's play Pippa Passes. Very right. It is taken from Browning's play Pippa Passes. In poems such as Fra Lippo and Del Sarto, Browning reflects his love for Greece, Italy, France और Spain. इन poems में किस कंट्री के लिए ब्राउनिंग ने अपना लव एक्सप्रेस किया है? ग्रीस, इटली, फ्रांस और स्पेन? अरे वाह, वेरी वेरी गुड जिन्होंने आंसर दिया। इट इज इटली। यस, इटली इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। Which English poet defined poetry as a criticism of life? Shelley, Arnold, Tennyson या Macaulay? किसने कहा that poetry is the criticism of life? Very good again. Yes, it is Matthew Arnold. Very very right. It is Matthew Arnold. चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 14. Which novel by Dickens is written against the background of the French Revolution? Again, a very very easy question. A Tale of the Two Cities, Hard Times, Nicholas Nickleby or Bleak House? हाँ जी, based on the background of the French Revolution. Yes, and it is a very, very easy one for all of you. Very right. It is A Tale of Two Cities. बिल्कुल सही. A Tale of Two Cities is based on the French Revolution. Question number 15. Which poet wrote this celebrated line? Knowledge comes but wisdom lingers. किसने कहा कि knowledge जो है वो it comes but wisdom lingers? Knowledge तो आ जाती है लेकिन विजडम जो है वो पीछे पीछे चलती है। नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स। ब्राउनिंग, टेनिसन, आर्नल्ड या किपलिंग? तो दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय, यस, टेनिसन। इट इज टेकन फ्रॉम हिज पोयम लॉक्सले हॉल। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ये लाइन ली गई है टेनिसन के लॉक्सले हॉल में से। अब जिस दिन भी एक दिन मुझे टाइम मिल गया ना बच्चे, मतलब आपके पेपर से 15 दिन पहले, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, कुछ लाइंस मैंने सेव करके रखी हुई है पोइट्री की, बस वो फाइल इनकम्प्लीट ही चल रही है, 1.5 महीना हो गया और मैं उस फाइल को कंप्लीट करके जो है आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16. Which poet used all kind of symbols like rose, falcon, horn, tower, wind, lion, etc.? Ezra Pound, Arthur Symonds, W.B. Yeats या Owen? हाँ जी, which of these poet used all these symbols? Yes, absolutely right. It was none other than W.B. Yeats. Absolutely right. Question number 17. Which Indian novelist and short story writer is often known as the mouthpiece of the underdog? I'm not going to explain this question.
Is it Mulk Raj Anand, Bhabani Bhattacharya, Neeraj C. Chaudhuri or Anita Desai? प्रिया, मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे सबके साथ शेयर कर दूं. ठीक है? I'm tired, Sandhya. I am damn tired. Yes, it is Mulk Raj Anand. Underdog matlab poor people. Question number 18. Which Indian poet was inspired by Edmund Gosse to choose Indian themes and scenery? Chaman Nahal, Meira Chand, Jayanta Mahapatra, या Sarojini Naidu? Oh my god, I didn't change the options. It made it easy for you. Yes, it is Sarojini Naidu. और एडमंड गॉस को उन्होंने अपनी फर्स्ट कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड डेडिकेट भी करी थी, है ना? द गोल्डन थ्रेशोल्ड डेडिकेट भी करी थी एडमंड गॉस को, if I'm not wrong. Question number 19. Dash is the name given to a variety of language distinguished according to its use. Use के मुताबिक, is it register, dialect, inflection या word order? हाँ जी. Dash is the name given to a variety of language distinguished according to its use. Yes, it is obviously register, which is used according to the profession, according to, we can say, the circumstances. Very right. Question number 20. The title Arms and the Man is borrowed from Homer, Virgil, Chaucer या Shakespeare? हाँ जी. Arms and the Man title G.B. Shaw ने कहाँ से borrow किया था? So he borrowed it from, yes, Virgil से borrow किया था. It was actually in Latin. In Latin language में था. Arma, Vermicu, Cano. Right? Question number 21. Doublespeak and thought crime are concepts found in the work Brave New World, Fahrenheit 451, 1984, या Homage to Catalonia. Again, a very, very easy one for all of you. These concepts are taken from 1984 by George Orwell. Very, very right. It's taken from George Orwell. Question number 22. The Battle of the Books takes place in the King James Library, St. James Library, James Royal Library या James Regent Library? हाँ जी, The Battle of the Books, जो कि स्विफ्ट का लिखा हुआ हिस्टोरिकल वर्क है, that battle takes place in confusion again, King James Library. It was not St. James Library, बच्चे, it was King James Library. Yes. Question number 23. It was King James Library. Identify the one who is not a movement writer. इनमें से जो है हर्षल diplomatic. Swift remained diplomatic till the end. Okay? उसने किसी भी बात का कंक्लूजन नहीं दिया था. ठीक है? So he left it unanswered. Yes. Ted Hughes was not a movement poet. Very, very right. Question number 24. The theory of the impersonality of the poet was put forward by Samuel Coleridge. पक्का सेंट जेम्स लाइब्रेरी था इन किंग जेम्स पैलेस. ओके, ठीक है जी, फिर इसको करेक्ट कर लीजिए. ठीक है जी. यस, इट वाज सेंट जेम्स लाइब्रेरी इन किंग जेम्स पैलेस. ओके, हाँ जी. कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? हुकमचंद, इकबाल सिंह and जुगत सिंह are characters in a work. चलो मैं कल वेरीफाई कर लूंगी. Yes, it was खुशवंत सिंह in ट्रेन टू पाकिस्तान. ये जी, in ट्रेन टू पाकिस्तान. जी. क्वेश्चन नंबर 25. The theory of impersonality. किसने दी थी theory of impersonality?
So the theory of impersonality was given by, yes, none other than, yes, I have checked it. But it was King's Library. It was King James Library. Yes, it was King James Library, right? King James Library is right. Yeah, चलिए जी. Question number 26. Gradgrind is a character. हाँ जी, किंग्स जेम लाइब्रेरी है, मुझे मत कंफ्यूज किया करो. मैं रोने लग जाऊंगी. हाँ जी, Gradgrind is a character in the novel. Yes, it is Hard Times. Very, very right. Question number 27. The author of a discourse concerning the original and progress of satire is Alexander Pope, John Dryden, Jonathan Swift, या Samuel Johnson. A discourse concerning the original and progress of satire. Who is the writer of this satirical work? Yes, it is John Dryden. Very, very right. It is John Dryden. Question number 28. Which of the following does not belong to the group of dramatists called University Wits? Marlowe, Peele, Webster, or Lodge? Hanchi, who is the odd one out? Which of these writer was not a university wit? Yes, it was Webster. Very right. It was the odd one out. क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा देखो, मार्लो है, जॉर्ज पील है, थॉमस लॉच है, थॉमस किड है, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नैश है, ठीक है, और कौन रह गया? एक और कौन रह गया? यस, इट वाज थॉमस लिली. ठीक है जी. Question number 29. The Heart of Midlothian refers to a prison, a castle, an island, or a mountain. Heart of Midlothian, जो कि हार्डी का वर्क है, जॉन लिली है. ओके वीरपाल, ओके. यस, इट्स अ प्रिजन. जी, इट्स अ प्रिजन. Heart of Midlothian is by Scott. Right, right. Yes, it's a prison. Okay, ji. Question number 30. Past and Present is the work of Samuel Johnson, Thomas Carlyle, George Borrow, Charles Kingsley. Yes, who is the writer of Past and Present? Again, a very, very easy question for you all. Yes, it is Thomas Carlyle. Question number 31. Milton's Como is a hymn, a sonnet sequence, an elegy. इसमें gap रह गया. A mask. What is the genre of Milton's Como? Very right. It's a mask. पूरा title क्या था? A mask presented at the Ludlow Castle. Okay? A mask presented at the Ludlow Castle. Question number 32. The romantic poet who transformed a sequence of 14 line units into an ode is John Keats, Percy Bysshe Shelley, William Wordsworth या Samuel Taylor Coleridge. किसने जो है सोनेट के ट्रेंड को चेंज करके ओड्स लिखनी स्टार्ट करी थी? Yes, it's a very easy one. It was John Keats. Very, very right. Question number 33. Ulysses is a portrait of a city, Dublin, on 16th June 1904, 19th July 1908, 12th May 1905, या 16th April 1904. इट्स माई प्लेजर रमा कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैंने इजी कर दिया, इट्स माई प्लेजर. यस, तो इट इज 16th June 1904 और इसको क्या कहा जाता है? डूम्सडे.
right? Question number 34. Who called the 18th century our excellent and indispensable age of prose and reason? 18th century को एज ऑफ प्रोज रीजन किसने कहा था? वॉल्टर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड या चार्ल्स लैम्ब? हाँ जी, किसने 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज जब स्टार्ट हुई थी called it age of prose and reason? Yes, it was Matthew Arnold. Question number 35. The phrase fear is foul is associated with the alchemist, Macbeth, the malcontent या the broken heart? Again, the options have made it easy for you. Fear is foul is associated with, yes, Macbeth. Okay, and it is spoken by the three witches. Okay, who speak this sentence? The three witches. Question number 36. Thank you so much, Varinder. I fall short of words whenever any of you say anything like that. Thank you so much. आप लोग, you make me feel overwhelmed. You make me feel overwhelmed. Thank you so much. Dryden's An Essay of Dramatic Poesy was first published in 1582, 1568. नहीं एकता तुसी बहुत मेहनत की है, तुसी बहुत मेहनत की है एंड कर रहे हो. हाँ जी, Essay of Dramatic Poesy by Dryden was published in, yes, 1668. The Yahoos feature in The Marriage of Heaven and Hell, Gulliver's Travels, A Journal of the Plague Year, The Vicar of the Wakefield. Yes, it is Gulliver's Travels. Very, very right. Thank you so much, बच्चे. Thank you so much. बस करो अब, रुलाओगे मुझे नहीं तो. Which of the following is an autobiographical poem? इनमें से कौन सी poem autobiographical है? The Rime of the Ancient Mariner, The Eve of Saint Agnes, The Prelude या Don Juan? Yes, which of these is an autobiographical poem? बिल्कुल बिल्कुल राहुल. D, it is The Prelude. Very, very right. Question number 39. Michael Henchard is a character in Richardson's Clarissa, Fanny Burney's Evelina, Hardy's The Mayor of Casterbridge. Hanji, where do you find this character Michael Henchard? Yes, it is Hardy's The Mayor of Casterbridge. Question number 40. Porphyria's Lover by Robert Browning is an ode, a ballad, a dramatic monologue, or an elegy? Hanji, what is the genre of Robert Browning's Porphyria's Lovers? यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं रहता है. Robert Browning is equals to dramatic monologue. Dramatic monologue is equals to Robert Browning. Question number 41. Crow is a book of poems by Ted Hughes, Philip Larkin, Seamus Heaney या Kingsley Amis? Yes. Who is, हाँ जी, पोर्फोरियाज लवर में वो उसके बालों से ही उसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है जी, उसके बालों से ही उसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है. Yes, it is by Ted Hughes. Very, very right. Question number 42. William Golding is the author of The Coral Island, Lucky Jim, The Inheritors, or After the Fall? Yes. Who is the writer of, I mean, विलियम गोल्डिंग का वर्क इनमें से कौन सा है? यस, इट इज द इनहेरिटर्स. क्वेश्चन नंबर 43. रामास्वामी इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन कांथापुरा, द सर्पेंट एंड द रोप, कैट एंड द शेक्सपियर, कॉमरेड किरिलोव? हाँ जी,
Ramaswamy is the central character in which novel? Yes, The Serpent and the Rope by Raja Rao. Very right. Question number 44. The Spenserian stanza has 6 lines, 7 lines, 8 lines, or 9 lines. How many lines are there in the Spenserian stanza? Absolutely correct. Yes, there are 9 lines. Very, very good. There are 9 lines. And the last question for today. Eliot's phrase objective correlative occurs in his essay Metaphysical Poets, Hamlet, Tradition and the Individual Talent या मिल्टन. किस ऐसे में इलियट का ये फ्रेज अपीयर होता है? Metaphysical Poets, Hamlet, Tradition and the Individual Talent, or Milton? Absolutely correct again. Yes, it is taken from Hamlet. So yes, this is it for today. कल वापस मिलेंगे हम सेम इसी टाइम पे. इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन जो है जारी रखिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैव अ वेरी गुड डे. कीप प्रिपेयरिंग लाइक दिस. एंड मोस्टली बहुत जो है मौसम खराब चल रहा है, बीमार हो रहे हैं बहुत लोग, तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखिए. प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिए कि आप ठीक रहेंगे तो ही जो है आप अच्छे से पढ़ पाएंगे. तो just keep taking care of yourselves and keep preparing. Thank you so much everyone. Thank you.